So today video we have to discuss this sign. Okay. So first of all we have to draw the rectangle of 10 by 4.5. Okay. तो सबसे पहले AutoCAD में जाइए, यूनिट सेटअप चेक कर लीजिए, डेसिमल, प्रिसाइज एंड mm. डन. REC for rectangle command. First point 10 tab 4.5 enter. Okay. We have to draw this. Then again here 20 radius arc. So you have to take arc command of start and radius. Start and 20. Okay, you have to place this point, explode, trim. Then you have to fillet command of 1 radius, F for fillet, R for radius and 1. Repeat command spacebar. Okay, then we have to take line command and 0.5. again downward आइए आप यहाँ से, orthon 0.5 0.5. ओके, देन यहाँ पर आपको इधर जाना है 0.6 एंड नीचे 0.15. देन अगेन लाइन कमांड 0.6 डाउनवर्ड 0.15. ओके, देन अगेन 0.5. देन टेक लाइन कमांड एंड दिस, आप इसको इरेज कर दीजिए यहाँ पर एंड अगेन इसको, एंड अगेन टेक लाइन कमांड और अगेन नीचे 1.15. तो 0.15. देन यहाँ 0.6. ओके, 0.6. देन नीचे आपको आना 1. नीचे आइए आप यहाँ पर 1. देन अगेन इधर साइड 1, लेफ्ट साइड 1 एंड हैव टू मेक अ फिलेट ऑफ 1 रेडियस. ओके, तो अगेन लाइन को 1 F एंटर, R एंटर 1. ओके, 1 and 1. Okay, now we have to draw this one and this again. यहाँ पे दिया गया है 1 रेडियस का, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बड़ा सर्कल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारा 10 रेडियस का है एंड इसका सेंटर यहाँ से 10 and 2. तो गो टू लाइन कमांड, मिड पॉइंट 10 and here 2. मेक अ सर्कल, सेंटर पॉइंट ऑफ 10. Okay, then have a fillet of 1 radius, F for fillet, R for radius and 1 here and here. Okay, then for this fillet we have to make a downward circle. तो डाउन सर्कल है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए तो 36.5 यहाँ पर आप आइए. सबसे पहले तो लाइन ले लिया आप यहाँ से मिड पॉइंट एंड 36.5. अगेन यहाँ पे कोई स्पेस लाइन ड्रॉ कर दीजिए आगे पीछे. देन हैव टू टेक अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यहाँ से 2 डिस्टेंस ऊपर. ओके, टेक लाइन कमांड हियर एंड 2, मेक अ सर्कल ऑफ 8 रेडियस. ओके, टू डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद 8 रेडियस का अपनी सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है. ओके, डन. हैव टू मेक दिस line here and here. Okay, then take a 10 radius, 12 radius circle, tangent 10 radius, tangent and 12. Okay, trim again this part and this part and this part too. Okay, then we have to draw 24.5 of arc, start and radius. Take arc 1, start and radius, start point, end point and 24.5. ओके, डन. देन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 फ्लेट दिया गया है 1 रेडियस का, जो कि दिया है. तो F फॉर फ्लेट, R फॉर रेडियस एंड 1. तो इसको रख सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है. F एंटर, R एंटर एंड 1 रेडियस अगेन. एंड इसका आपको डिटेल यहाँ पर दिया होगा. ओके, तो फ्लेट कमांड हमें देना है किसके बीच में, इसके और इस लाइन के बीच में, दिस एंड दिस. ओके, डन. ट्रिम. ओके, आई थिंक से यस. ठीक है, डन. आप इतने पार्ट यहाँ पर मिरर करा दीजिए. एक 1 मोर पार्ट यहाँ पर भी रह गया आपका.
0.5 रेडियस का यहाँ पर भी आप एक फिलेट लगा दीजिए। यहाँ पर आई F एंटर, R एंटर, 0.5। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगेन एंटर टर्न कर देते हैं, इसको सीधा मिरर करा देते हैं आप पार्ट को। ओके, सेलेक्ट दिस पार्ट, MI एंटर, okay, done. Then we have to do detailing. Then select this one, continuous, others, load dead dash line, यहाँ पर अपलोड करा लीजिए, सेंटर लाइन, ओके ओके, सेलेक्ट सेंटर पॉइंट, टेक रेडियस हेयर, बहुत छोटे दिख रहा है तो डी एंटर करिए आप। यहाँ पर मॉडिफाई में जाइए, फिट में आइए और यहाँ पर 3, ओके, अगेन रेडियस, वाइड, this one, this one, this part, and this part, and take a linear tool, linear, from here to here, this 10, 4.5, from here to 10, 10, and point 2 fillet of 0.3 here, I think so. Okay, done. Again take radius 1,